Shockingly, the US State Department's 2023 Religious Freedom Report on India alleged instances of violent attacks on minority groups, especially Muslims and Christians, including killings, assaults and vandalism of houses of worship. The report on international religious freedom released on Wednesday said that in 2023, senior US officials continued to raise concerns about religious freedom issues with their Indian counterparts. The report claims that India has seen a rise in attacks on minorities under Prime Minister Narendra Modi, who recently won a third term, and his Bharatiya Janata Party. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. US Secretary of State Antony Blinken said when the report was released in a rare direct rebuke of India. This report has come as a shock as well as surprise for India, since the US usually refrain from blatantly criticizing India due to its close economic ties with India and New Delhi's significance in countering China. The US report listed some sporadic incidents to substantiate their claims. The Indian embassy in Washington had no immediate comment. The Indian government denies discriminating against minorities and says its welfare policies like food subsidy schemes and electrification drives aim to benefit all Indians under the slogan Sabka Saath Sabka Vikas. Meanwhile, some Muslim leaders have come out to condemn the US report. India is the land of blissful coexistence, peaceful progress of all communities together. And today, when we look at around the world, one of the rarest examples of unity in diversity, which is seen in India, is exceptional. As a Gaddi Nashin of Dargah Ajmer Sharif, having represented Ajmer Sharif and India in over 100 countries, it has been an honor to serve our nation. And when we talk about the policies and when we talk about the Constitution, the Article 25 to 28, it gives us the religious freedom and the protection of all the minorities, irrespective of their faith, language, region, where they come from. I think this is a great inclusive understanding that India has always stood for. When we talk about the government policies of inclusivity, when we talk about the Prime Minister Housing Scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana, which is open for all Indian citizens, 1.4 billion Indian citizens are beneficial, are open to receive these policies, whether it is healthcare, Ayushman Bharat, or the housing for all, or even the public distribution system. It is inclusive for all, and it never makes any discrimination whether you are a Hindu, Muslim, Christian or a Sikh. As an Indian, we have this protection from the Constitution of India right from the independence till today, and no one can take that away. I think that is something that needs to be cherished and amplified on all levels. As an Indian, proud Muslim, I am happy to serve our nation and represent Ajmer Sharif and India in global platforms, talk about interfaith dialogues, peace initiatives, as India has always stood for those dialogues, and as an Indian, we feel proud to serve our nation in the best of manners. आज जो यूएस बेस्ड एक रिपोर्ट जारी हुई है जो रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर जारी की गई है, जिसमें उन्होंने जो इंडियन रिलीजियस फ्रीडम स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज के लिए जो रिमार्क किया है, विच इज टोटली फॉल्स एंड बेसलेस, हम उसको सीधे से रिजेक्ट करते हैं एंड बियॉन्ड द फैक्ट है वो, जबकि जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, स्थिति है, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। अमेरिका को कतई किसी किस्म से ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के माइनॉरिटीज के बारे में बिना फैक्ट जाने, बिना ग्राउंड रिपोर्ट जाने इस तरह की बेसलेस रिपोर्ट को जारी करे। हम इसको कंडेम करते हैं, सख्त अल्फाज में कंडेम करते हैं। बीइंग इंडियन मुस्लिम, रिस्पॉन्सिबल इंडियन मुस्लिम, मैं इसको कंडेम करता हूं। दिस रिपोर्ट इज टोटली बेसलेस, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आप कंपेयर करें अदर देन मुस्लिम कंट्रीज में जो मुसलमान रह रहे हैं, उनसे लाख दर्जे अच्छे हालात में रह रहा है। हमें पूरी तरीके से यहाँ पर धार्मिक आज़ादी है, पूरी तरीके से रिलीजियस फ्रीडम्स हमें मिला हुआ है। हम तमाम हमारे मजहबी अरकान बखूबी बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। उनको कहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती तो क्या सड़कों पर नमाज देखने को मिलती है आपको? अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती तो यहाँ दुनिया में आप मुस्लिम कंट्री जो आसपास के एशिया के अंदर, उनमें कंपेयर कर लें मसाजिद कितनी है और हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद कितनी है, आप कंपेयर करें। दरगाहों से कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है? दरगाहों का मैनेजमेंट तो हिंदुस्तान की हुकूमत के हाथ में है। दरगाहों से ज्यादा दीन निकला है, इस्लाम फैला है।
درگاہوں کا مینجمنٹ دیکھیے آگے ماشاءاللہ یہاں پر تمام خوشحال ہیں. اور مودی گورنمنٹ نے پچھلے 10-15 سال میں جتنی بھی اسکیم انٹروڈیوس کی ہے وہ سب کے لیے کی گئی ہے وداؤٹ ڈسکریمنیشن. سب نے اس کا لابھ اٹھایا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے بدھسٹ ہو. تو اس طریقے کی جو رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں یہ ہندوستان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بینگ انڈین مسلم, میں امریکہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گریباں میں جاگیں کہ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ہم محبت امن کے ساتھ رہتے ہیں. ہندوستان کا مسلمان خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے اور تمام اپنے مذہبی اراکین, ہندوستان کا مسلمان نہیں, دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی تمام اپنے مذہبی جو اراکین ہیں, رسم و رواج اس کو بدستور انجام دے رہے ہیں. نیوز ڈیسک کൗമുദി گلوبل.